लगा हुआ और बिल्कुल हम करीब इस समय विक्रम डिसेंट के स्टार्ट कर दिया गया है और रफ ब्रेकिंग जो वो है घड़ी है वो बहुत ही नज़दीक होगी। इस समय हम धीरे धीरे अब उसकी गति को कम करना शुरू करेंगे। Yes, the descent phase of operation for the Vikram lander has just been initiated with the firing of the 4 liquid engines, which I was mentioning, the 4 throttleable engines. The activity has just started, and right now we are at 35 seconds since the engines have fired. And just to give an update, the Vikram lander, when it was in an orbit of around 30 kilometers, when the descent operation started, it had a velocity of nearly 1640 meter per second. So what we are going to do through this entire phase of 15 minutes of operation, when the powered descent will be done, is to make this orbital velocity of the Vikram lander from 1640 meter per second to almost 0 meter per second, so that the spacecraft could land on the surface of the moon. So the activity has just initiated. As you can see on your screen the view of the Mission Control Center, with Chairman ISRO and Director of URSC, and Dr. Suresh briefing the Honorable Prime Minister about the flight event that are going on. So the time elapsed is almost 1 minute 28 seconds. जी हाँ, धीरे धीरे गति कम होती हुई 1507 मीटर प्रति सेकंड हो चुकी है, जबकि हमने 1630 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रारंभ किया था और हर घड़ी की हर क्षण की जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री को पहुंचाई जा रही है। और इस समय हम करीब 1 मिनट 52 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं और वेगमान लगातार घटता हुआ, और यही उद्देश्य भी हमारा है कि धीरे धीरे जो रफ ब्रेकिंग है उसके दौरान चारों जो इंजन हैं, उन चारों 800 न्यूटन वाले इंजन जो भारत ने पहली बार विकसित किए हैं, ये पूरी जो प्रणोद प्रणाली है ये पहली बार विकसित की गई है और इस प्रणाली के चारों इंजन लगातार फायर करते हुए प्रज्वलित होते हुए और लगातार वेगमान घटता हुआ। So almost 2 minutes 20 seconds, and we expect this rough braking phase which was just initiated to last for nearly 10 minutes, during which time the velocity, the orbital velocity which the Vikram lander possessed of the order of 1640 meter per second should reach to something like 140 meter per second at the end of the rough braking phase. So basically during this phase it's a real brute force of operation where we are trying to kill the velocity which the spacecraft currently has, making it revolve around the moon with an orbital altitude of 30 by 100 kilometers. So I am seeing on my screen that the velocity from 1680 meter per second has come down to almost 1300, so nearly 350 meter per second velocity for the Vikram lander has been reduced. 3 minutes have elapsed, and maybe another next 7 minutes we should have quite a substantial reduction in the velocity to ensure that at touchdown we have almost near 0 meter per second velocity, to ensure that the Vikram lander has a soft landing on the surface of the moon at the very desired landing site location. So we are right now in the rough braking phase of operation, nearing 3 minutes 39 or 40 seconds, and almost I would say 480 meter per second velocity has been reduced, which is clear indication that the entire operations during which the 4 throttleable engines are being fired has been performing absolutely nominally, and the reduction in the velocity and the down range, the range it has to, after the descent operation has started, it has to cross almost a range of 600 kilometers before it lands at a predefined destination. So I am seeing a very close match with the pre-flight and the flight prediction. The velocity of the Vikram lander has come very close to 1100 meter per second, so almost to 500 meter per second velocity reduction has happened in just 4 minutes. So another 6 minutes to go before we reach in the mission objectives of the rough braking phase. जी हाँ, करीब 6 मिनट का समय 4 मिनट का समय व्यतीत हो गया है। 6 मिनट लगभग और वेगमान कम करने के लिए लगेंगे। इस समय करीब जो सारी गतिविधियां हैं, सारी प्रणालियां हैं, वो अभीष्ट रूप से चल रही हैं। इस अवतरण को सुरक्षित और कोमल या सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग बनाने के लिए अनेक अभिकल्पनाओं पर विस्तृत चर्चा और गहन अध्ययन के पश्चात ही विशेषज्ञों ने अनुमति प्रदान की थी। इसरो के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि
इसरो ये पहली बार करने जा रहा है। इसके लिए प्रोपल्सन, ऑनबोर्ड कंप्यूटर, सेंसर्स, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, थर्मल जैसी अनेक प्रणालियों के उचित सामंजस्य से ये सब कुछ संभव हो सकेगा। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी गतिविधियां स्वचालित रूप से चल रही हैं। इस दौरान लैंडर में लगे अनेक संसूचक जरूरत के अनुसार आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं और ऑनबोर्ड कंप्यूटर उचित गणना के आधार पर यथोचित निर्णय लेकर लैंडर को चंद्रमा की तरफ उतरने में सहायक सिद्ध हो रहा है। करीब करीब 939 मीटर प्रति सेकंड का वेग हम प्राप्त कर चुके हैं। लगभग अगर हम बात करें तो करीब करीब 700 मीटर प्रति सेकंड का वेग हम घटा चुके हैं। इसलिए हम ये बड़े कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि हमारी जो ये प्रणोदक प्रणाली है, प्रोपल्सन सिस्टम है, ये बड़े ही सुचारू रूप से गतिविधियां अपना निष्पादन दे रहा है। इस समय हम करीब करीब 6 मिनट व्यतीत कर चुके हैं और आने वाले 4 और मिनट में हम लगभग जो इसका क्षैतिज मान है वो हम काफ़ी कम कर पाएंगे। करीब करीब शून्य के बराबर, लगभग 140 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगा। So almost 3 minutes, the velocity should come down to something like 146. So on your screen you can see the plot where we have on the x-axis the downrange and on the y-axis is the altitude. So almost maybe in the range of 10 to 20 kilometers. And velocity also is, yeah, I think maybe. So a very close match. And which clearly indicates the 4 throttleable steering engines which has been basically designed for this Vikram lander for the first time has been performing extremely well. And as per the plan, the timeline is going very precisely, 7 minutes 34 seconds, so maybe another 2.5 minutes to go. And we have almost touched the 630 meter per second, so maybe another 500 meter per second velocity is what we expect to get it reduced. At the same time, if you look at the downrange, it has traveled quite close to the landing site now. Just we are maybe 75 kilometers away from the actual landing site. When the maneuver was initiated, we were almost 600 plus kilometers, and yeah, and quite a velocity, and I think it has been getting reduced quite substantially. The one thing I would like to just mention here, during the descent phase of operation, as I mentioned, the rough braking phase is the real brute force of velocity reduction. And since we are trying to bring an object from an orbiting around the lunar surface to have a touchdown, there is a need for us to reduce the velocity. It's something like braking, and quite eventually the job is being done now. Maybe it's around 450 meter per second and another 2 minutes plus to go. In fact, I think when we reach an altitude of almost the target for this particular rough braking phase is to attain an altitude of 7.4 kilometers, when the velocity should have touched almost 146. So maybe another nearly 2 minutes, maybe 1 minute to go. जी हाँ, लगभग एक मिनट की दूरी पर हम लोग करीब जो लैंडिंग साइट है उससे करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, और जो ऊंचाई है वो भी करीब 10 किलोमीटर बच गई है। और इस समय जो वेगमान है वो भी करीब 376 मीटर प्रति सेकंड है। इसे और भी कम करना होगा, इसलिए जो चारों इंजन हैं वो भी अभी तक प्रज्वलित हैं। हम करीब 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब पहुंचेंगे उस समय जो एब्सोल्यूट नेविगेशन फेज है वो शुरू कर दिया जाएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस समय जो लैंडर है वो थोड़ा सा अपने अक्ष से झुका हुआ होगा, और लगातार इस समय हम सारे वैज्ञानिक, आप अगर देख पा रहे होंगे, 73.3 वर्टिकल वेलोसिटी और डाउन रेंज जो है करीब 18 किलोमीटर हम दूर पर हैं लैंडिंग साइट से। और इस समय जो इमेजर है उसका डेटा भी डाउनलोड हो रहा है। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी बाकायदा ऑन हो चुके हैं। इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हर वैज्ञानिक लगातार छोटे छोटे आंकड़ों पर नजर बनाए हुए है, और आप सुन पा रहे होते तालियों की गड़गड़ाहट के साथ 210 मीटर प्रति सेकंड की जो वेगमान है वो कर लिया गया है। और रफ ब्रेकिंग सिस्टम जो है, रफ ब्रेकिंग जो फेज था वो लगभग अपने अंतिम दौर पे।
So we have finished the rough braking phase now, because the target for that was 7.4 kilometers and the velocity was nearly 140. So the Vikram lander has successfully completed the rough braking phase, and now we have entered the next phase of operation, which is the absolute navigation or attitude control phase. And this particular event is going to last for nearly 38 seconds. And the 4 throttleable engines are continuously on, and we see the velocity is something like 86 meter per second, and roughly 4.43 kilometers away from the landing site. So all going well. Just awaiting the announcement for completing. Yes, the rough braking phase has been successfully completed, and we have entered the next phase of braking operation, which is the fine braking start, which is going to basically commence from 5 kilometer altitude, and this particular operation is going to last for nearly 96 seconds, wherein the Vikram lander will be reaching an altitude of just 400 meters above the landing site for initiating the vertical descent operations. So we are almost 11 minutes 52 seconds after the descent operation has started, just awaiting the announcement for the end of fine braking phase. 12 minutes. Maybe in another few seconds we should hear the announcement that the fine braking phase of operation has been completed, and we expect at the end of this the vehicle to reach an altitude of almost 400 meters. And the velocity right now, if you look at the plot, we have the Vikram lander has a horizontal velocity of nearly 48 meters and vertical velocity of 60 meter per second. जी हाँ, करीब करीब 12 मिनट 30 सेकंड का समय व्यतीत हो चुका है। हम लोग काफ़ी नज़दीक चंद्रमा की सतह पर, और फाइन ब्रेकिंग जो है वो है फेज है, वो लगभग ख़त्म होने की स्थिति में। Just waiting for the confirmation for the fine braking end. तनाव भरे क्षण होते हैं जब इस तरह की कोई भी घटना के हम बहुत ही करीब होते हैं, क्योंकि वर्टिकल डिसेंट स्टार्ट होने वाला है। इसमें सारे संसूचक जो हैं वो लगातार अपनी गतिविधियां प्रदान कर रहे हैं। After the completion of the fine braking end, we will have the vertical descent operations, where the spacecraft will be moved from nearly 400 to 700 kilometers down to the lunar surface. GCS empty. Confirm the करीब 13 मिनट 48 सेकंड व्यतीत हो चुके हैं, और एल्टीट्यूड जो है वो लगातार कम होता हुआ We're just waiting for the confirmation. The spacecraft, as we see on the screen, is showing the horizontal and vertical velocity of nearly 48 and 59 meter per second. थोड़े से क्षण जहां पे हमें आंकड़ों की प्राप्ति के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, जैसे ही आंकड़े प्राप्त होते हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। Confirm any signal from station. Stand by. Negative. No signal from Madrid. It's view of the mission control center.
सभी के चेहरों पर थोड़े तनाव के क्षण, शायद आंकड़ों के निश्चितता के लिए हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। Once we have the updates from the mission control room, we will come back to you. So we're just awaiting for the लगभग राधाकृष्ण जी 16 मिनट 12 सेकंड बीत गए हैं और जो वेगमान है वो 48 और 59 ही दिखा रहा है, तो हम अभी आंकड़ों की पुष्टि के लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे। Odi Vikram, confirm station, configuration for receiving both S band and X band are configured. That's affirmative. We are not receiving from Madrid, HBK and Mauritius. we are just awaiting for the updates from the mission control room. So please stand by. लगभग 17 मिनट 38 सेकंड व्यतीत हो चुके हैं और जब तक आंकड़े सामने नहीं आ जाते कुछ कहना मुश्किल है। सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर, कंप्यूटर पर आंकड़ों का अध्ययन करते हुए ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। So view of the mission control center. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके चेहरे पर भी उत्सुकता या आंकड़ों का इंतजार
तकनीक से चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। पहला भारतीय अभियान है जो देश में विकसित प्रौद्योगिकी के साथ चांद की सतह के बारे में जानकारियां जुटाएगा। और मेरे ख्याल से अगर ये आज सब कुछ सही होता है तो चंद्रमा की सतह पर रॉकेट उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है और कुछ ही क्षणों में वो हमारे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ सक वरिष्ठ वैज्ञानिक और विभिन्न केंद्रों के निदेशक उनका स्वागत करते हुए जैसा कि आप इसको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के शिवन ने, डॉक्टर कुन्नी कृष्णन जी जो यूआरएससी के डायरेक्टर हैं और डॉक्टर वी श्रीनिवासन जी जो इस ट्रैक के निदेशक हैं, वो इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए बहुत महत्वपूर्ण होता है वो देश वो क्षण जहाँ पे उसके रहनुमा उसके साथ खड़े होते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है जब हमारे माननीय प्रधान जी हमारे साथ हैं। So we just witnessing the arrival of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has just arrived here at the Mission Operation Complex at ISRO's Tracking and Telemetry Command Network in Bangalore. He will be amongst us to witness today's important historic event when Vikram lander will be on the surface of the moon. So on your screen, Dr. K. Shivan, Chairman ISRO, Indian Space Research Organization, giving him a brief outline of the mission where the Vikram lander and the rover Pragyan is being explained to him. Confirm the parameters are extracted. Honorable Prime Minister of India. We'll be moving to the dignitaries gallery. प्रधानमंत्री जी का उत्साह देखने लायक, हर छोटी छोटी चीज का बड़ी बारीकी से निरीक्षण करते हुए, चहलकदमी करते हुए धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हुए। भारतीय वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच एक बार फिर से मुझे याद आता है जब मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए इसी तरह हमारे बीच आए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री और ये दोबारा एक बार फिर से सभी से परिचय लेते हुए डॉक्टर के राधाकृष्णन, इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, उनके पीछे थे प्रोफेसर के विजय राघवन जी जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इस तरीके से फिर से एक बार उन्होंने डॉक्टर सुरेश जी के सामने उनसे हाथ मिलाया, डॉक्टर टी के एलेक्स जी, डॉक्टर पीएस गोयल जी, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करते हुए। So the countdown is at minus 12 minutes. So within the next 12 minutes you will have the command that will be issued for starting the descent phase of Vikram lander. So Honorable Prime Minister of India is seated in the dignitaries gallery along with some of the other senior officials of ISRO as well who are here. And in the dignitaries gallery we also have some of the other prominent and very important dignitaries who will be witnessing the launch. As you would have seen during the coverage, we have a lot of students who have been invited here to witness the launch. This basically the students who are here have been selected based on the online space quiz competition that was conducted. Witness the launch. This basically the students who are here have been selected based on the online space quiz competition that was. This basically the students who are here. अच्छा अभी देखना ये ओरिजिनल चल रहा है ना 3 वाला चंद्रयान 3 का है। अभी देखना ये ओरिजिनल चल रहा है ना, अभी मैं भी बोल रहा हूँ मैं भी बोल रहा हूँ चंद्रयान 3 का मेरा
is the demonstration of safe and soft landing on the lunar surface. This demonstration is a critical aspect for ISRO's future interplanetary missions. In addition to this, the mission objectives also on the lunar surface, demonstration of roving capability and conduction of in situ scientific experiments on moon's surface. Is the demonstration carried on the shoulders of India's heaviest rocket LVM demonstration on the 14th of July. Chandrayaan-3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36,500 kilometers. ISRO, in its mission plan of following the incremental trajectory approach, carried a total of 5 earthbound maneuvers. The fifth apogee-raising maneuver, which took place on the 25th of July, placed the spacecraft in an orbit of 250 by 1,27,000 kilometers. At the early hours of 1st August, the translunar injection was carried out, after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly 3,84,000 kilometers for its rendezvous with the moon. The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the moon. An orbit of 288 by 3,69,328 kilometers was achieved at the end of the translunar injection. जी हाँ, ट्रांसलूनर इंजेक्शन किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए बहुत ही आवश्यक परंतु कठिन ऑपरेशन होता है। इस सफल मैन्यूवर के बाद चंद्रयान-3 पृथ्वी से दूर निकलकर चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में एक हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी के द्वारा पहुंचाया गया। पुनः 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के द्वारा चंद्रयान-3 को 160 किलोमीटर के पेरीलून और 18,000 किलोमीटर के अपोलून के साथ चंद्रमा के इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। टीएलआई के तरह एलओआई भी एक बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। इसमें हमें यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि उपग्रह के वेगमान को एक निश्चित बिंदु से घटाया जा सके, अन्यथा उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। एलओआई के सफलतापूर्वक परिचालन के बाद चंद्रयान-3 की कक्षा को 4 बार और परिवर्तित किया गया। इस दौरान चंद्रमा की अधिकतम ऊंचाई को घटाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में प्रपल्सन मॉड्यूल का लगभग 755 किलोग्राम ईंधन का उपयोग हुआ और चंद्रयान-3 के वेगमान को लगभग 850 मीटर प्रति सेकंड कम कर दिया गया। लैंडर मॉड्यूल को लगभग 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस्त 2023 को प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। पुनः लैंडर मॉडल के ऑर्बिट को 2 डीबूस्ट मैन्यूवर्स के द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर 25 गुणे 130 किलोमीटर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान-2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूवर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। Make it further complicated. Indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan-3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere.
The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan-3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full-level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system, and associated guidance, control, and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart pioneered by Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan-3 mission. आप जैसे बिजनेस अब हो रहे हैं तैयार। चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग चंद्रयान 2 के तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, LHBC, LDV और LHDAC का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LDV जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराप यानी लेजर इनर्शियल रेफरेंस एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। OHRC पेलोड अब तक काफ़ी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ाकर 4 × 2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan-3 is equipped with a suite of Chandrayaan-2 orbiter have provided abundant remote sensing data of moon. Equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe CHAST will measure the temperature profile and thermal conditions. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind, and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets.
We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN-32 located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real-time by station and is flown to the Mission Operation Complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases: the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, एटीट्यूड होल्ड फेज, जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के 2 महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क IDSN 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा। इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग 0 हो जाएगी। The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the powered descent, to the start of the powered descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा।
आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आईडीएसएन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. जी हाँ, अब देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। During this rough braking phase, the lander velocity will be brought down from all this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. आरुषि, अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर क्षैतिज दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि एएलएस एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा।
During the entire descent, there is no ground intervention as nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले. The lander imager is continuously taking photographs of the moon's surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 577 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब अपने आधे सफ़र को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of near